Am I audible to all? Hello. Hello. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Good evening, sir. I, How is your health? I think all have attended. Am I audible? Yes, Because sir. we have some internet issue, I guess. Either. How is your health? Hello. Jyoti, sir, how is your health? I'm good, sir. Good And that evening, now sir. I'm doing good. Please go ahead. Yeah. Sir, introduce yourself and start the lecture, sir. Please. Okay. Oh, sure. Yeah. Okay. Uh, so I think everybody can see the presentation, right? Hello. Yes, sir. Everybody can see the presentation, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. So I need some response so that I can start, right? So until now, whatever you have read, right? What lecture? I guess Mr. Ajink has taken few lecture, right? So whatever the lecture he has taken, so what you have learned from there? What is the basic of polymer? So that we can go to the jump into properties, right? So everybody is comfortable with English, or we can try it Hindi. Because some part I can explain in Hindi, but every time it's difficult to explain technical terms in Hindi, right? Explain Hindi. Yeah, I can't explain in Hindi, but there are some technical terms, so it is difficult to understand to translate into Hindi, right? So, whatever the yeah, whatever the terms that I'll try to explain, right? So, whatever what you have learned about polymer, I need some response, right? What is polymer? So that we can go to properties. Sir, polymer is a long branch of monomers. So it is a long chain of monomer, right? Yes, sir. So you have studied about polymer, its molecular weight, right? Until now, Yes, sir. right? Molecular weight. Yes. Types of polymer you have studied, Types of polymer, yes, sir. Thermosets and thermoplastics we studied. and then thermoplastics, right? Yes. So in that type you have studied about addition, condensation, right? How addition polymer has been formed, how condensation polymer has been formed, right? Yes, sir. Right. So the basic of polymer is that so you have a monomer. So with the help of monomer, you are getting a larger molecular weight. So that larger molecular weight is known as polymer, right? So when you derive polymer, and also in industries you have used different polymers, right? I think everybody is using polymer, and all are from polymer industries, right? Yes, sir. You all are polymer industry, right? Yes, yes. Yeah. So why I'm saying so? Because when you talk about polymer, you need to understand its basic properties, right? So basic properties means what? What basic test you are doing in polymer? One by one, can somebody explain to me what are the tests that you are doing in polymer, so that I can go move forward and explain. Check the MFI. Yes. We check the mechanical properties. We check the ESCR.
these are the properties. So basically, the polymer, what are the properties of general properties? सर आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे. I think it is audible now because I have some internet issue, I guess, because our internet is not working. Now it is audible. Yes, sir. Sir, Yes, sir. another thing, please change into presentation mode, sir, so that we can see it. Okay, so it is not in presentation. That's what I'm saying. Whether it is now it is. Yeah. You can Yeah. see the presentation. Yes. So what are the basic properties means? There are mechanical properties, right? There are thermal properties. There are chemical properties, right? In polymer, right? So how these properties has been incorporated in the polymer that we are going to study, right? So what are the basic properties in terms of chemical properties? As she said that ESCR CC is checking a polymer, right? And other than ESCR, there are aging properties, weathering properties, right? Then you must be seeing these solubility properties of polymer, right? When you are solubilizing polymer in a different solvent, or you are checking the solvent resistance of any polymer, right? These are the chemical properties. What are the mechanical properties? When you talk about mechanical properties, you are checking the strength of the polymer, and you are checking the elongation, right? So these are the mechanical properties. When you are talking about electrical properties, then you are checking the conductivity and all. Then optical property, whether it is transparent, hazy, or it is a more gloss or less gloss polymer, that what you are checking with the polymer, right? So these are the basic properties and how it is related to your structure, right? When you talk about structure, that means you are talking about the monomer, in which monomer the polymer has been formed, right? So what are the structure you must be known? So have you gone through any kind of polymer structure? Have you gone through any kind of polymer structure that you can give me the idea, then I can explain to you. Sir, you are talking in terms of crystal structure. That is not crystal. What are the chemical structure of any polymer? Chemical compositions, right? Have you seen the any chemical composition of any polymer or monomer or polymers? आपने No पढ़ा idea, है? sir. मैं बताऊं. अभी तक I hope you have studied, right? पॉलीइथिलीन देखा. So पॉलीइथिलीन, you have पॉलीप्रोपिलीन. polyethylene. Have you seen the structure? I can. One second. Where is the monitor? कहाँ से है? एक मिनट. Okay. So you have seen this structure, right? Polyethylene. Can you see the cursor? Yes, sir. Yep. Yeah. So these are the basic uh, structure of polymer, right? This is the structure of polyethylene, right? As you said, and this is the structure of polystyrene, right? And this is the structure of polypropylene. So what from these three structure, what you understood, uh, like basic, what you understood from this structure? These three monomers are different, right? So polyethylene is mostly made of carbon and hydrogen, whereas polystyrene is mostly made of carbon and hydrogen and a side chain benzene ring, right? Whereas polypropylene is made of carbon and hydrogen and a side chain of alkyl group, right? So these are the basic difference between every polymer. So when you talk about polymer, there are hundreds of polymer, or maybe thousands of polymer which has a different structure, right? You understood? Yes, sir. Yes, right. So different polymer has a different structure. So based on the structure of polymer, we are going to predict its properties, right? That is the whole idea of understanding the structure properties of polymer, right? So when you talk about a polyethylene, right, that is mostly linear structure, right? The polyethylenes are considered to be the most linear polymer, right? So when you talk about linear polymer,
In that polyethylene also you have different types of polyethylene, like high density polyethylene, low density polyethylene, right? Linear low density polyethylene and very low density polyethylene, right? So when you talk about high density polyethylene, it is mostly linear polymer. When you talk about low density polyethylene, it is mostly linear polymer with branch structure, right? When you talk about very low density polyethylene, it is mostly linear polymer with short branch structure, right? So these are the difference. Why I'm saying so, when you get the polymer in the industry terms, right? So whoever, if you are using polyethylene in industries, right? So mostly what happens, so what type of polyethylene you are using, right? Whether you are using HDP, LDP or LLDP, but this polymer has a different properties based on its structure, right? As you can see, where is in high density polyethylene, the crystallinity means the crystal structure is more higher as compared to low density polyethylene, right? Or linear low density polyethylene. So though, so based on that purpose, though it is a property has been designed with, if it is a branch polymer, the property is going to get reduced, the crystal properties will, crystallinity is going to get reduced, also the melting temperature is going to get reduced. That's why we are differentiating different polymer, right, as based on its properties, right? Understood? If you are not understanding, then you can ask me, then I can simplify something like that. Hello. Yes, if you are not understanding, then you can ask me something like that. Okay. So these are the example of any linear polymer, which are polyethylene, polystyrene, and polypropylene. So polyethylene is considered to be most linear polymer than polystyrene and polypropylene. Also in polyethylene, there are different types of polyethylene like LDP, LLDP, HDP. So based on the copolymerization, so these polymer can be differentiated. That is the whole idea of any polymer structure, right? So what are the other polymer which is a what you can say a bulkier structure, right? What is a bulkier structure? What do you understand by bulkier structure? Means the polymer change which is a bulkier ring like benzene ring like this, right? So what I'm saying so is, when you talk about bulkier polymer, when the structure is bulkier, so the strength also and the thermal properties like melting temperature, HDT value, BSP value, this is going to get increased because due to the presence of bulkier chain in the bulkier structure in the main chain of the polymer, right? Understood? So mostly the bulkier polymers has a higher properties as compared to linear polymer, right? That is the whole idea. So that's why I have So put it हायर here. प्रॉपर्टी मतलब सब सारी प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं या सिर्फ मैकेनिकल या No, केमिकल? no, not chemical. When you talk about chemical properties, is something that is mostly very much what you can say performance properties, right? So the general properties जो आप बोलते हो ना, that is basically based on strength and thermal properties, right? Chemical properties is something that is mostly performance based, right? Something अगर आप पॉलिस्टर ले रहे हो, तो पॉलिस्टर का में भी केमिकल प्रॉपर्टी पॉलीथिलीन जितना अच्छा नहीं है, राइट? क्योंकि पॉलिस्टर्स आर मोर सब्सेप्टेबल टू द एरोमेटिक सॉल्वेंट्स, राइट? जो पॉलिस्टर्स रहता है मोस्टली एरोमेटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सब्सेप्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीथिलीन, राइट? क्योंकि पॉलीथिलीन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्टली इनर्ट. तो इसलिए व्हेन यू टॉक अबाउट chemical properties, it is mostly you are talking about the use where you are checking the solvent resistance, as you said you are checking the ESCR and all. So if not every property, I am talking in terms of mechanical and thermal properties. So the more the bulkier structure, the mechanical and thermal property is going to get increased, right? Understood? जी सर. Okay. So so let get back to the previous slide actually. uh, why
Okay. So okay. So when you talk about thermal properties, right? So generally, as you can see, these are the basic data of any thermal properties of polymer. So these are the polymer, as you can see, like PET, LDP, PVC, polypropylene, polystyrene. Like these are the different polymers, and they have different thermal properties like TG, TM, right? So what do you mean by TG? It's something. Have you heard of this term TG, glass transition temperature, anywhere in the industries? Because it's the most technical term used in polymer. Hello. Jesus. Okay. So what do you mean by TG? So in basic understanding, what you can say what is TG, so that everybody can understand, or I'll explain. Explain कर दीजिए. So TG is something. When you talk about TG, it is something where your below that temperature, your polymer is mostly considered to be brittle, right? Right. It is a temperature range below which your polymer is considered to be brittle, and above which it is mostly considered to be somewhat flexible, right? So that is the temperature. That is the temperature range below which your polymer is considered to be brittle. Brittle means it will behave like glass, right? It will behave like glass, or it will break like, if you are going to break it and break like glass. Whereas above that temperature, your polymer is mostly ductile means it is flexible, right? It will not break like glass, right? It will show some flexibilities, right? So that is the basic concept of TG. Yes, sir. सर ये amorphous के उसमें रहता है क्या TG? So TG poly is mostly considered to be a properties of amorphous polymer rather than a semi-crystalline polymer. So mostly when you talk about polymer, so either polymer are semi-crystalline or amorphous, right? So there is no part of any crystalline polymer. That's why every time we are discussing, we are defining the crystallinity in percentage, whether it's a 50% crystalline, 60% crystalline. That is the dependent on the percentage of crystallinity. But every time when you talk about, either it is a semi-crystalline polymer or it is an amorphous polymer, right? So there is no such concept of crystalline polymer. So when you talk about TG is mostly a property of amorphous polymer, whereas TM, melting temperature, is mostly a property of semi-crystalline polymer, right? Hello, have you थोड़ी understood? सर थोड़ी हिंदी भी यूज कर लीजिए सर, थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है. Uh, Samir, the what you can say, अगर कोई पॉलीमर है, राइट, आप समझ रहे हैं, राइट? अगर कोई पॉलीमर है जिसके टेम्परेचर, जो एक बहुत ही ज्यादा सख्त पॉलीमर है, बिलो एक टेम्परेचर के नीचे वो बहुत ही ज्यादा सख्त, मतलब ग्लास आपको पता रहेगा, राइट? कांच कांच के जैसा बिहेव करता है, राइट? इट बिहेव लाइक ग्लास, मतलब वो स्ट्रांग रहता है और नीचे गिरते ही वो टूट जाता है, मतलब लाइक दैट. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी बिलो एक टेम्परेचर जिसके नीचे वो पॉलीमर है, वो ग्लास जैसा बिहेव करता है. और ऊपर वो रबर, रबर मतलब मोस्ट नॉट लाइक प्योर रबर, मोस्टली लाइक समवॉट, आप कोई भी पॉलीथीन या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बैग उठाइए जो जैसे नरम जैसा बिहेव करता है ना, वैसे बिहेव करता है. तो वो एक रेफरेंस टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर रेंज है जिसके नीचे पॉलीमर ग्लास जैसा बिहेव करता है, ऊपर एक रबरी रबर जैसा बिहेव करता है. So that is the temperature. The transition temperature is known as TG. That's why the name comes from that only. So that's why it is known as glass transition temperature, right? जिसके नीचे पॉलीमर जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है और ऊपर जो है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है. So that is the concept of TG, right? यस सर. So whereas TG जो होता है वो मोस्टली जो पॉलीमर जिसमें क्रिस्टल कम, सो इट इज मोर टेक्निकल इन टर्म्स, बट आई कांट हेल्प इट. मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स आर considered to be technical due to the what you can say, the course is like that, right? So what is the properties and all. But if you are going to say what is TG, then there is the TG. And what is melting temperature? The melting temperature मतलब आपका कोई भी चीज, right? Whatever the polymer is there, so it is always going to melt, right? आप कोई भी पॉलीमर प्रोसेस करते हो, it is going to melt, right? यस सर.
Okay, so for melting the polymer, so you need some melting temperature, right? एक melting temperature के ऊपर आप process करते हो कोई भी process में, injection molding, whether it is injection molding, extrusion, whatever the process, right? So that particular temperature above which the polymer started to melt, right? एक melting temperature के ऊपर ही आपका polymer melt होता है और उसके ऊपर जाके certain range पे वो flow होना चालू होता है. The flow temperature को आप ये बोलते हो कि this is the processing temperature, जहाँ पे थोड़ा बहुत पॉलीमर को आप फ्लो कर सकते हो, राइट, बाय अप्लाइंग प्रेशर, राइट. सो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस रेफरेंस की टेम्परेचर के ऊपर आप जाके ही पॉलीमर को प्रोसेस कर सकते हो, उसके नीचे प्रोसेस नहीं कर सकते. तो मेल्टिंग टेम्परेचर टू देन यू हैव टू गो फ्लो टेम्परेचर, देन यू कैन प्रोसेस द पॉलीमर, राइट. तो मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर ही जो आप एक टर्म्स आप मोस्टली इंडस्ट्री में वट एवर द टर्म्स यू आर यूजिंग इन द इंडस्ट्री इज मोस्टली कंसिडर्ड टू बी एमएफआई, राइट. आप जब एमएफआई के ऊपर जाते हो देन यू हैव टू गो अबव इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, देन यू हैव टू, क्योंकि एमएफआई वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप पॉलीमर मेल्ट करते हो, राइट. सो understanding the concept is little bit different, difficult for like what you can say, uh, so you have to bear with that. The most concept is from melting temperature. When I'm talking about the most technical terms, मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे आप पॉलीमर को मेल्ट करते हो, और ग्लास ट्रांजिशन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमर आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है. दैट्स द होल कंसेप्ट, राइट. यस. सर ये मेल्ट फ्लो इंडेक्स के टेम्परेचर तक हमें मेल्ट करना पड़ता है क्या इसको? नहीं नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर वो है जिसपे आप हैव यू हर्ड ऑफ द यस समथिंग सर, लाइक इंस्ट्रूमेंट मेल्टिंग. लाइक डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री एंड ऑल, आपने कभी नहीं देखा? हैव यू नहीं हर्ड? सर, अभी नहीं देखा. नहीं. सो एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट. जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको बोलता हूँ, एक डीएससी करके एक इंस्ट्रूमेंट है. व्हेन यू गो टू थर्मल प्रॉपर्टीज यू विल गेट टू नो, राइट. जिसमें आप क्या करते हो, आप पॉलीमर को ना एक हीट करते हो, राइट. हीट करके आप उसका टेम्परेचर सब मेजर करते हो कि क्या क्या टेम्परेचर पॉलीमर में हो सकते हैं, व्हाट आर द टेम्परेचर दैट इज प्रेजेंट इन द पॉलीमर, राइट. तो मोस्टली वो जो है उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री. तो ये क्या करता है, कैलोरीमेट्रिक प्रॉपर्टी जो भी है पॉलीमर का वो मेजर करता है, राइट. लाइक टीजी, टीएम, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये सब मेजर करता है. तो जो आप मेल्टिंग टेम्परेचर बोल रहे हो, व्हाई आई एम टेकिंग द रेफरेंस, मेल्टिंग टेम्परेचर ये होता है जिस टेम्परेचर पे पॉलीमर आपका मेल्ट हो रहा है, राइट. और एबव मेल्टिंग टेम्परेचर आप पॉलीमर का एमएफआई मेजर करते हो, राइट. बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर आप नहीं करते. तो मेल्टिंग टेम्परेचर सपोज 180 आया, तो आप पॉलीमर का एमएफआई मोस्टली एज पर द एसटीएम स्टैंडर्ड 210, 230, वट एवर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे हैव गिवन. फॉर polypropylene it is 230, right. For polyethylene it is 190, राइट. सो वो टेम्परेचर पे जाके आप उसका एमएफआई मेजर करते हो. एमएफआई टेम्परेचर जो है वो फ्लो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में पॉलीमर फ्लो होता है. पर मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे पॉलीमर मेल्ट होता है, राइट. अंडरस्टूड? यस सर. Yes, आपका मेल्टिंग, यस. तो मेल्टिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर वेयर पॉलीमर स्टार्टेड मेल्ट, राइट. एंड एमएफआई वो टेम्परेचर जिसमें आपका पॉलीमर फ्लो होता है. तो इसलिए मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है उस पर आप एमएफआई नहीं करते. मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे फ्लो होता है पॉलीमर, उस टेम्परेचर पे आप एमएफआई करते हो, राइट. तो आपका एमएफआई तो आपको पता रहेगा, राइट. जो इंडस्ट्री में यू जनरली डू एमएफआई, राइट. हैव यू एनीवन ऑपरेटेड एमएफआई? किसी ने एमएफआई यूज किया है? नो. मैंने यूज किया है हृदय देसाई. या जी सर, एक्चुअली जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका टीडीएस में एक मेल फ्लो इंडेक्स रहता है. तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है जो पॉलीमर का ओके. और उसका प्रॉपर्टी, क्योंकि हर एक पॉलीमर का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होता है एज पर एप्लीकेशन. जैसे यस. पॉलीप्रोपिलीन का हम लोग 230 में एमएफआई करते हैं, ओके. 2.16 केजी में. इसका स्टैंडर्ड है एक्चुअली एसटीएम D1238 का. तो यस, उससे पता एग्जैक्टली. चलेगा ये सब पैरामीटर है. 190 डिग्री सेल्सियस फॉर पॉलीथिलीन, 230 फॉर पॉलीप्रोपिलीन. सो इस हाँ तरह से तो होता है सर. हाँ पीईटी का शायद आईवी होता है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी दैट इज yes, डिफरेंट. yes, and polyamide का your पोलामाइड ऑल्सो relative viscosity, yes. है. So हाँ. these are the terms for measuring the viscosity, right? So why I am talking about only MFI is
when you talk about MFI should be done above the melting temperature, right? So where it is done, where it is done at the flow temperature of your polymer, right? So it is not done at melting temperature. So melting temperature of polypropylene is around 160, 165, as I mentioned here. Whereas MFI is done at 230, right? As you said. So 230 is the flow temperature of that polymer, but melting temperature is 160, 165. That means above melting temperature, when you get a viscosity so that your polymer can flow मतलब अब जैसे पानी बहता है तो थोड़ा बहुत बहेगा, कोई भी विस्कस चीज जो है, अब कर्ड ले लो, हनी मतलब शहद, तो वो कैसा है, उसका फ्लो कैसा है, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, राइट? वो पॉलीमर का भी फ्लो वैसा ही है, आप उसको जब तक दबाओगे नहीं तब तक वो, या प्रेशराइज नहीं करोगे तब तक वो फ्लो नहीं होगा, राइट? मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक टेम्परेचर पे उसका विस्कोसिटी रिड्यूस करके वो आपको उसको फ्लो करवाने की कोशिश करते हो। सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज classified in ASTM 1238 and ISO 1133, I guess, right? Uh, Something like, if you can correct me, Hriday. Uh, Hello. Hello. Yes, sir. So that is the temperature, I guess, for ISO. It is ISO 1133. Uh, what I Uh, remember. Maybe I also forgot, sir. But sir, I just want to mention one thing. Yeah. Let's say, for example, there is three type of temperature for polymer. Softening temperature also we have heard this term. Softening temperature, melting temperature, and the processing temperature. And Yes, processing temperature will be softening always temperature is the plus most. 30 to 50 degrees Celsius than melt temperature. And why important that higher processing temperature? Because we have to incorporate the pigment or additives into the polymer to make that product or the application. No. So you are somewhat correct, right? Not that I will tell 100%. Because look, we cannot process any polymer we above its देख, सब पॉलीमर का डिग्रेडेशन टेम्परेचर रहता है। डिग्रेड मतलब पॉलीमर जहाँ पे डिटोरेट हो जाएगा पॉलीमर, राइट? Mechanically deteriorate हो जाएगा, thermally degrade. हाँ, तो हम वो टेम्परेचर पे जाते ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो एक मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है, लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर में आपका विस्कोसिटी बिल्डअप नहीं होता है, राइट? सो आप क्या करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जिसमें आप पॉलीमर को फ्लो करवा सकते हो, राइट? जैसे पॉलीप्रोपिलीन के लिए 230 मेंशन्ड है कि पॉलीप्रोपिलीन का विस्कोसिटी स्टेबिलिटी भी रहता है, डिग्रेड भी नहीं होता, और वो उस टेम्परेचर में अच्छे से प्रोसेस हो सकता है, राइट? एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज फ्लो टेम्परेचर. So that at that temperature we are doing the MFI, that is melt flow index, right? Right. So that is the whole idea. So TG जो होता है वो मोस्टली सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, TG के ऊपर ही पॉलीमर का सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है, whereas TM के ऊपर आपका मेल्ट हो जाता है पॉलीमर, राइट? मतलब मेल्ट होना मतलब इट इज नॉट लाइक द पानी के जैसा बहेगा, ऐसा नहीं होता। मेल्ट होना मतलब उसका जो क्रिस्टल्स है वो टूट जाते हैं, राइट? Right. क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट जाता है, राइट? whereas flow temperature is the temperature where your polymer started to little bit by applying certain pressure या load, तो आपका पॉलीमर फ्लो होता है, राइट? सो दीज आर द basic idea of melting temperature, crystallization temperature, or say melting temperature and glass transition temperature, right? Understood? तो सर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर टीजी से डिफरेंट होता है? Look, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो होता है वो मोस्टली टीजी के एबव होता है, राइट? It is not nearer to TG. TG एक transition temperature है, where you get a transition from glassy state to your amorphous state, right? That is the transition temperature. Means आपके glassy what you can say, not glassy, your glassy state to your softening state, right? वो उसका transition है कि glassy state से आप softening state पे जब ट्रांजिशन करते हो तो आपको टीजी मिलता है। तो एक पर्टिकुलर दैट टेम्परेचर यू कैन नॉट गेट ए सॉफ्टनिंग टेम्परेचर में भी 10 डिग्री हायर देन दैट या 5 डिग्री हायर देन दैट, वेयर सो इसके लिए आप स्पेसिफिकली सॉफ्टनिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आप VSP करते हो, राइट? बाइकर सॉफ्टनिंग पॉइंट। हेलो, क्या Yes, sir. करते हैं सर Right. सॉफ्टनिंग? क्या बोला आपने, क्या करते हैं सॉफ्टनिंग का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए? VSP, दैट इज कॉल्ड बाइकर सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये अच्छा, हाँ बाइकट सॉफ्टनिंग, ठीक है हाँ, ठीक है। so that is the temperature where we exactly find out what is the softening point of that polymer, right? सर्वाइकल सॉफ्टनिंग पॉइंट वो है ना जो हम पेनिट्रेट करते हैं? Yes, 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 one
So that is the temperature where you exactly find out the separating point, right? So as here you can see, so these are the different polymers, and so I'll sharing you this slide. That these are the different polymer, and these are the TG of that particular polymer, right? Why it is in range? Because there are certain grade of polypropylene which is a minus 20 TG, and there are certain grade which is a minus 30, right? So as you know, for what we are studying now is mostly around homopolymers, right? So you have you heard of? I think you have heard of terms homopolymer and copolymer. You have studied now previous lecture. Hello, hello. Oh, okay. So you got heard of homopolymer and copolymer, the polymer which are made of single atoms or single type of monomers and known as homopolymer. Whereas if it is made from different monomeric unit, then it is known as copolymer, right? Sometimes what happen when you in industrial use, right? When you are using in industries, right? So you are getting you are seeing different types of polymer, right? You are seeing different type of, let us take the example of polypropylene. You are seeing different types of polypropylene, right? There are different types of polypropylene available which you are going to use in industries. So from there are grades of homopolymer or polypropylene also, and there are grades of copolymer or polypropylene also, right? So mostly जो homopolymer होता है वो एक ही सिंगल एटम से यूज होता है, whereas कोपोलीमर और पॉलीप्रोपिलीन मींस यूर प्रोपिलीन के साथ आपका दूसरा मोनोमर भी रहता है, लाइक ब्यूटीन और ऑक्टीन types of monomer that is present with the propylene, right? So that you will get a better properties, right? Like impact properties, जो कि आपका polypropylene का बहुत ही कमजोर है, और बहुत polypropylene is mostly lacking in the impact properties. So that for to avoid that, you are using copolymer. You are doing copolymerization of polypropylene with different octene or butene, right? So that you will get a better impact properties, right? That's why you need a uh, copolymer, right? So why it is in range? Because depending upon the grades, it can be minus 20, minus 25, minus 30. So that's why it is mentioned in grade, right? So there are polypropylene which are made at 160, 165. There are homopolymer or polypropylene which can melt at 170, 175, right? So based on the molecular architecture or molecular segments architecture, the melting temperature is going to increase or decrease. Also similarly, the TG is also going to get increase or decrease uh, due to the presence of uh, what you can say different type of polymer, like homopolymer होगा तो अब उसका it will be higher TM than copolymer, right? और अगर कोपोलीमर हुआ तो उसका टीजी बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू होमोपोलीमर. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है कि आपका पॉलीमर क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है, राइट? ऑल्सो सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट engineering polymer, right? What do you mean by engineering and what do you mean by competitive polymer? Can I got to know that something? इंजीनियरिंग पॉलीमर किसको बोलते हैं और कॉम्पिटिटिव पॉलीमर किसको बोलते हैं? Anybody can answer what is engineering polymer and what is competitive polymer? Engineering polymer specialized application में use होता है, like Okay, so automobiles. Sir, actually, engineering type of प्लास्टिक जो डिजाइन किया जाता है सुपीरियर मैकेनिकल, मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन डिमांड के लिए उसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है, जिसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी काफी स्ट्रांग होता है, थर्मल प्रॉपर्टी भी. हाँ सो इसलिए शायद उसे इंजीनियरिंग पॉलीमर, क्योंकि काफी वर्सेटाइल 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 होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, तो ओके इसीलिए जैसे पीईटी हो गया और पीबीटी हो गया, काफी पॉलीमर्स है ऐसे, हाँ. So in नायलॉन. हाँ, here PET, PBT, like polyamide, जो polyamide मतलब जो नाइलॉन आप बोलते हो, right? So these are engineering polymer. Why it is engineering polymer? As
he said, जैसे उसका what happens जनरली, उसका द प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा एनहांस्ड है, मतलब आपका पॉलीप्रोपिलीन से उसका सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब पॉलीप्रोपिलीन से ज्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसका, राइट। थर्मल प्रॉपर्टीज भी अच्छा है, सो दैट आपको एक एनहांस प्रॉपर्टीज मिलता है, आप एक हायर एंड एप्लीकेशन में यूज करने के लिए, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंजीनियरिंग पॉलीमर। जो कमोडिटी पॉलीमर है लाइक पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, राइट, पॉलीस्टाइरीन, इसका जो है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत कमजोर होता है या कम होता है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग पॉलीमर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कमोडिटी पॉलीमर, राइट। तो आप लेमन टर्म में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि दो प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही रिलेटिवली कम है, बहुत ही नहीं, बहुत ही होगा तो रिलेटिव रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग पॉलीमर, सो दैट इट इज कैटेगराइज्ड इन कमोडिटी पॉलीमर। और जिसका प्रॉपर्टीज ज्यादा है, थोड़ा सा एनहांस प्रॉपर्टीज है, तो उसको आप बेटरली इंजीनियरिंग पॉलीमर बोलते हो, राइट। तो कंपैरेटिवली ऐसा होता है, जैसे क्लास में ये होता है ना कि आप ये बहुत अच्छा पढ़ता है, वो बहुत गंदा पढ़ता है, ऐसा नहीं होता। एक बहुत गंदा पढ़ता है, थोड़ा अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वो कैसे आप मार्क के बेसिस में डिसाइड करते हो, राइट। यू डिसाइड बेसिड ऑन द मार्क कि हाँ ये अच्छा लड़का है, सॉरी टू बहुत। इंटरप्ट सर। हेलो। हाँ हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट। आप अगर एप्लीकेशन से बताएंगे तो वो थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पॉलीमर का जो एप्लीकेशन है वो काफी हाँ, हाईली डिमांडिंग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया। नो नो, Hriday, as you said, also competitive polymer are using in automotive. Have you heard of polypropylene? यस, पॉलीप्रोपिलीन आल्सो यूज, बट Polypropylene, what is the percentage of polypropylene used in automotive? You know what is the percentage of polypropylene? It is the highest used polymer in automotive. डोंट एग्जैक्ट। It is a commodity polymer, right? So राइट, एग्जैक्टली डोंट नो। how you are enhancing the properties, right? देख, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिमांड होती है या जरूरत होती है, अगर उतना प्रॉपर्टी आपका मीट हो गया तो आप इंजीनियरिंग पॉलीमर में जाते ही नहीं हो, राइट। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट इंजीनियरिंग पॉलीमर यूज नहीं होता। इंजीनियरिंग पॉलीमर जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होता है। अगर मैंने सपोज आपने एक लोकल कोई गाड़ी खरीदा, लेट अस कंसीडर यू हैव टेकन मारुति, राइट। मारुति का जो आपका वट एवर द गाड़ी जो 7-8 लाख के रेंज में आता है, और सेम अगर आप कोई सेम गाड़ी आप स्कोडा का ले रहे हो या समथिंग अराउंड 20 लाख, राइट। जो इंटीरियर जो डिजाइन होता है ना, तो इंटीरियर का जो चीज आपको पॉलीप्रोपिलीन में मिलेगा मारुति के गाड़ी में, वो सेम चीज आपको स्कोडा के गाड़ी में पॉलीकार्बोनेट एबीएस का मिलेगा। Why? गुड एग्जांपल सर, गुड हाँ, एग्जांपल। तो बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग, राइट। आप कॉस्टिंग कट करोगे तो कहाँ पे कट करोगे? यू हैव टू डील विद द मटेरियल, राइट। एक मटेरियल का स्टैंडर्ड होता है, उसके बेसिस पे आप डिजाइन करते हो कि ओके, अगर ये बाहर का एक्सपेंसिव गाड़ी है तो मैं इसमें एक्सपेंसिव और हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर यूज करूंगा। बट दैट डज नॉट मीन दैट दैट पॉलीमर डज नॉट पॉलीप्रोपिलीन डज नॉट हैव दैट प्रॉपर्टीज। उसमें भी वो प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो ये उस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा सुपीरियर है, पॉलीकार्बोनेट और एबीएस। दैट इज जैसे एज यू मेंशन सर, वो कुछ कुछ गाड़ी में, जैसे आप सुजुकी का एग्जांपल दिए, उसका हाँ जो हेडलाइट होगा वहाँ पे पीएमए में हाँ और जैसे नायलॉन ही यूज होगा, वहाँ पे हाँ पीपी यूज हो ही नहीं सकता, मतलब दैट इज स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिमांड, इंजीनियरिंग हाँ पॉलीमर इज बीइंग यूज्ड देयर। हाँ, वही इंजीनियरिंग पॉलीमर आप बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो भी हुआ, जहाँ पे आप लाइक सम पार्ट, जहाँ पे आपका रेडिएटर रहता है, इंजन का ये रहता है, वो कैसिंग होता है, वो पॉलीएमाइड का बना रहता है, राइट। नहीं तो कोई इंजीनियरिंग पॉलीमर में सुपीरियर पॉलीमर एक होता है, कम्युनिटी एक होता है इंजीनियरिंग, देन अदर वन इज स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब वो उससे भी ज्यादा, पॉलीफिलिन सल्फोन, पॉलीइथर कीटोन्स, ये जो पॉलीमर जो कि हाई टेम्परेचर प्लास्टिक्स के लिए जाना रहता है, जो which can sustain high temperature, right। so जैसे जैसे आपका पार्ट का इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ता जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस आपका डिमांड बढ़ते जाता है कि मुझे ये पॉलीमर में नहीं हो रहा है तो आई नीड मोर सुपीरियर पॉलीमर्स, तो आपका एप्लीकेशन में डिफरेंट पॉलीमर्स आता है, राइट। जब आपका एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर चीज में फील मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, राइट, सो दैट योर रिक्वायरमेंट गेट्स अचीव्ड, राइट। आप हायर स्टेज में जाते नहीं, लेकिन आप हमेशा याद रखना जो इंजीनियरिंग पॉलीमर है
वो मोस्टली हायर और सुपीरियर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू कम्युनिटी पॉलीमर होता है, दैट इट इज पॉलीमर। और उस हायर प्रॉपर्टीज जाना है तो दैट इज नोन एज स्पेशलिटी पॉलीमर बिकॉज इट इज यूज इन somewhat specialty applications, right? Yes, understood? Is there? Okay, I think so. I am facing a lot of issue in internet because I don't know why. Am I audible to all? Yes, yes, sir, loud and clear. Yes, sir. Also, because of internet issue, I am not able to change my slide. Now it is getting changed. Okay. Also, you understood the properties and all, and what are the engineering polymer and what is the community polymer, you understood, right? Right. Sorry? Okay. So, I told you earlier, so what are the different properties of polymer? Uh, so based on the property, you told that there are mechanical properties, there are thermal properties, right? Also the structure, there are amorphous polymer and crystalline polymer that you can also see from, as you told me earlier, right? The property and structure. As you can see from here, the crystalline domain और crystalline polymer जिसमें crystalline ज्यादा होता है उसका better properties रहता है as compared to amorphous polymer, right? Right. When you are comparing certain polymer, you should compare polymer with similar kind of structure, right? Similar kind of structure का मतलब क्या है? What is similar kind of structure? अगर आप हेलो, यस सर। so actually sorry to so I am facing a lot of issue now. I don't know सर because आपकी आवाज कट कट के आ रही है काफी। हमारा कॉलेज का इंटरनेट का इशू एक्चुअली, that's why it is coming like that. Also, I'm trying to connect with mobile. Also, it is not working. Now it is audible. यस सर। Okay. Yes, sir. So, so हाँ, कहाँ पे थे हम लोग की? okay. So when you are comparing two polymers, it should be in a similar class polymer, right? Similar class polymer means what? Like polyolefins. Olefins के अंदर आपका polypropylene भी आता है, polyethylene भी आता है, right? वो सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉलीमर है जो कि मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं, राइट? अगर आप बोलोगे कि एक पॉलीमर पॉलीइथिलीन है और एक पॉलीमर पे आपका कोई भी पॉलीमर ले लो जो कि अमोर्फोस है, दूसरा हायर एंड पॉलीमर लाइक पॉलीस्टाइरीन, राइट? तो ऑब्वियसली पॉलीस्टाइरीन का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो पॉलीइथिलीन से ज्यादा है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर है, राइट? राइट, उसमें आप बेंजीन रिंग्स है तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते पॉलीइथिलीन के साथ, राइट? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही समवट डिफरेंट है एज कंपेयर टू पॉलीइथिलीन। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग सम बेस्ड ऑन द क्रिस्टलाइन की, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीइथिलीन होना चाहिए, राइट? लाइक एचडीपी एलडीपी, क्योंकि वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टाइप है, और समवट पॉलीप्रोपिलीन जो कि उसी रेंज पे आता है स्ट्रक्चर, राइट? तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हमेशा कंपेयर करना, अदरवाइज व्हेन यू कंपेयर, नहीं तो वो जो जनरलाइज टर्म है कि आपका जो एमोर्फोस है उसका इतना ट्रांजिशन होता है और क्रिस्टलाइन का कम है ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है ऑल्सो स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर में कोई बल्की रिंग्स है, बल्की रिंग मतलब एज आई शोड यू अर्लियर,
जैसे बेंजीन रिंग हो गया, राइट, या कोई साइक्लिक रिंग दिख गया, तो ये जो रिंग होता है इसके वजह से आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट, टेम्परेचर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, सो दैट आप ज़्यादा हायर टीजी देखते हो एज कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर, राइट। जो पॉलीमर जिसमें टेम्परेचर अगर हायर हायर द क्या बोलते हैं हायर टेम्परेचर देख रहे हो, दैट मीन्स वो पॉलीमर का क्या है, स्ट्रक्चर में भी अलग अलग टाइप का केमिकल एलिमेंट्स है जिसके वजह से आपका स्ट्रक्चर जो वो पर्टिकुलर पॉलीमर का टीजी या मेल्टिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वट एवर इज इंक्रीज हो रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ दैट पॉलीमर इज गिवन हियर, राइट। मतलब ये जो आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल जैसा, तो इसमें इसका कहना है कि देयर आर अमोर्फस पॉलीमर एंड देयर आर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर, राइट, एज आई सेड अर्लियर कि आपका पॉलीमर ना कोई ये रहता है ना कोई भी पॉलीमर परफेक्टली क्रिस्टलाइन इधर अमोर्फस रहेगा इधर क्रिस्टलाइन रहेगा, right? So as you go upward direction, your thermal properties will going to get improved because your structure means your chemical structure of your polymer going to your chemical structure of your polymer is what, different, right? The structure are more different means it is a more number of chemical element present or bulky rings present, so that it improves the thermal properties of your polymer, right? So that's why you are getting a higher thermal performance, right? So आप जैसे जनरली जैसे आपने बोला था कि पॉलीएमाइड्स एंड ऑल, तो उसमें इसीलिए स्ट्रक्चर ज़्यादा है क्योंकि उसमें एक तो वो, हेलो, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. I thought I again cut off from the internet. सो पॉलीइथिलीन टेरिप्थालेट हो गया, पॉलीएमाइड हो गया, इसका स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा है, इसका परफॉर्मेंस इसलिए ज़्यादा है, थर्मल प्रॉपर्टीज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें अलग अलग केमिकल नेचर के सब्सटेंस ऐसे है जो कि आपके थर्मल प्रॉपर्टीज को एनहांस करने में मदद करते हैं, राइट। जैसे पॉलीइथिलीन टेरिप्थालेट में आपका आपको जैसे मैंने प्रीवियस ये में दिखाया था, सो उसमें अलग अलग टाइप के रिंग है, बल्कि रिंग्स है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंप्रूव हो जाता है, राइट। सिमिलरली पॉलीएमाइड के केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आप समझ रहे हो ना, एक बॉन्डिंग फोर्स रहता है, मतलब व्हाट यू कैन से सेकेंडरी फोर्स रहता है जो कि पॉलीमर को अंदर से जकड़ के रखता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, राइट। तो वो उसको हाइड्रोजन Is बॉन्डिंग that बोलते called van der Waals force? That is हैं। are you या talking about? यस, दैट इज द फोर्स, but they did not understand that. But van der So Waal it's is mostly taking place in gases, na sir? But no, not no, no, in these no. polymers. There is no, it's a type of van der Waal force, but the hydrogen bonding are something like intermolecular. Van der Waal force means what? It is not a van der Waals has defined a force from the gases. Gas के लिए आपने जैसे बोला कि बराबर है, right? It is mostly talking about when you talk about secondary forces. What do you mean by secondary forces? Secondary forces मतलब जो उसको आप मेजर नहीं कर सकते, राइट, लेकिन वो दैट कैन एक्ट, राइट। आप वो उसको मेजर नहीं कर पाते कोई क्वांटिटेटिव मेथड में, वो लेकिन वो एक्ट होता है कोई भी चीज को जकड़ के, मतलब ऐसे इंटरमोलिकुलरली कंपाइल करके रखने के लिए। सो दैट फोर्स इज नोन एज मोस्टली सेकेंडरी फोर्सेस, नॉट लाइक एग्जैक्टली द वैन डर वाल फोर्सेस, बट somewhat like that gaseous में वैन डर वाल्स ने डिफाइन किया कि देयर इज सर्टेन फोर्स व्हिच आर acting, right? That's why it's known as van der Waals force from gas, right? When you talk about polymer, we generally consider about it is secondary forces, right? Or you can mostly in polyamide it is now it is coming. Hello, Yes, yes. Yes, yes, sir. I'm feeling a lot of issue. I don't know what to do because college internet is not working, unfortunately.
Right now it's monohost. Okay. Uh, so these are the forces which act to improve the thermal properties of polymer. Exactly what you said. It is not like what you can say. Van der Waals forces is something which you define for gases, whereas secondary forces जो होता है like hydrogen bonding and all, these all can be act as a force to improve the thermal properties of polymer, right? So, or there are certain what you can say um, chemical structure which also improve the, like chemical structure means the structure which is a bulkier rings. Bulkier मतलब एक बड़े बड़े rings type structure जो रहते हैं उसमें I can show you also because it is not, I don't know why it is due to internet issue it is not working properly. So from that structure also you are getting the higher TG, right? The whole idea is कि अलग अलग factors है जिससे आपका TG influence होता है, right? It is not that एक single factor से आपका TG influence होता है, right? So ये दो आपका जो लेडर दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल का लेडर दिख रहा है, so there are semi crystalline polymer, amorphous polymer, and also in semi crystalline as you go higher you can also see a improvement in TG. Also if you go from amorphous from lower to higher like polyimide, polyethylamide, these are amorphous polymer, there also you are going to get an increase in TG, right? Understood? Hello. Yes. Fine. So unfortunately I don't know, I'm unable to switch also. एक मिनट, give me 1 minute. हेलो सर, अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो. यस सर। Okay. Very difficult for me to stay in the slide. I don't know. नहीं हो रहा है. कॉलेज का इंटरनेट का एक्चुअली इशू है ना. एक मिनट. One second. Let's see once I can connect it. In between that, if you want to ask me, you can ask me. Mm. Okay. You can see different polymer chains, right? You can see the structure. You can see the structure, right? Am I audible? Yes, we can see the structure. Right. So, as I showed you earlier, दो मोर नंबर ऑफ बल्कियर रिंग्स या आपको जिसपे ज्यादा बल्की रिंग्स रहता है, राइट, अगर वो प्रेजेंट है तो आपका टीजी इन्फ्लुएंस होता है, राइट. राइट. सो टीजी गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड, राइट. ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि वेदर योर पॉलीमर इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, राइट. एक होता है आपका पॉलीमर जो है वो कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर पॉलीमर है. लीनियर मीन्स इट इज इन ए लीनियर फैशन, अगर उसमें ब्रांच्ड रहा तो आपका टीजी गोइंग टू गेट रिड्यूस, राइट. अगर लीनियर रहा तो टीजी इज रिलेटिवली गोइंग टू गेट हायर. सिमिलरली अगर आपका पॉलीमर है उसमें बल्कियर रिंग्स है तो आपका टीजी को जो है वो
इम्प्रूव हो जाता है, राइट। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आपके कोई भी पॉलीमर चेन में अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या हेट्रो एटम्स है, हेट्रो एटम्स मीन्स अदर देन कार्बन। आपका मोस्टली जो चेन है, आप कैसे आप ये प्रेडिक्ट करके चलते हो ना, जो पॉलीमर है वो मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है, राइट। राइट। अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर उसमें अगर जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का लिंकेज आ गया बीच में, राइट। देर आर सर्टन पॉलीमर जैसे पॉलीइथर ईथर कीटोन से पिक, जिसमें आपका पॉलीमर चेन्स में ऑक्सीजन का लिंकेज है, राइट। तो उस सब केस में क्या होता है आपका, अगेन ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, हेट्रो एटम्स ऑल्सो आपका पॉलीमर का टीजू इंप्रूव होता है, राइट। सो देर आर सेवरल फैक्टर्स लाइक, जैसे बोला कि अगर आपके पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ज्यादा फोर्सेस ज्यादा एक्ट हो रहे हैं, तो आपका ऑल्सो देर इज ए इंक्रीज इन टीजी, राइट। So this is the basic properties of your polymer, where the Tg is getting increase or decrease due to the presence of certain parameters, right? So when you talk about structure properties, so mostly these are uh, unsaturation, conjugations, bond, right? Then ring structure कैसा है, as you can see these are the ring structures, right? Then आपका homopolymer है, then as I said you earlier, the homopolymer का structure जो रहता है is mostly in linear form, right? Unsaturation मतलब ये जो आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, these are known as unsaturations, right? Right. Similarly, आपका जो ring structure है, and these are the known as the ring structure. So these are the structure from where you will get a improvement or decrement in properties based on the structure. So that's why these are the different type of structure that I presented here. Understood? कंजुगेशन क्या होता है सर? Conjugation वो होता है जिसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो, conjugated structure, pi bond ट्रांसफर होता है, and you can say pi bond. So you're from chemistry background, right? No. यस सर. You're from chemistry background, right? पाई बॉन्ड. हाँ, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है मोस्टली जो पॉलीमर के केस में होता है, दैट इज जो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। ओके. यू नो व्हाट इज पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, यस सर. राइट। तो मोस्टली जो पॉलीमर है वो मोस्टली जो ये से जो स्ट्रक्चर रहते हैं ना, जिसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, जिसको कंप्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक पॉली एनिलिन एनिलिन, ये जो पॉलीमर है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, जिसमें पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है, जिससे आप उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव होता है आपका पॉलीमर्स का। There are some electrical conductive polymer, right? You know, I don't know, it's a very specialized polymer. Poly, electricity, polypyrroles, होता रहता है, आवाज कट रही है सर आपकी. Hello. Yes, sir. हेलो। हेलो। Yes, sir. यस सर. We'll ask me about
Am I- Hello. Yes, sir. Yes. So what we can do today, because I'm facing a problem in internet. So this lecture I am sending to Saturday, right? Saturday को मैं shift कर रहा हूँ. So we'll do on Saturday at that time, particular 5:30, 6:30. Is it fine for? ठीक है Hello. सर। यस सर, ठीक है मेरे लिए तो। Sorry. Because it's not like maybe interrupt हो रहा हूँ. इंटरनेट का भी पूरा इशू ही है. It is not happening because at 2:33 user से तब से इंटरनेट का इशू चल रहा है कॉलेज में. Otherwise I will figure it tomorrow. Hello. Yes, Hello. sir. यस सर। Okay. So if okay, so we are facing a lot of issue. So we'll take this lecture on Saturday, right? Is it fine to all? Yes, sir. यस सर। Okay. Because there is no point of taking, right? It is completely interrupting. चलेगा. Okay. Bye. Good night. बाय सर। Good night, sir. Good night, sir. Good night, everyone. गुड नाइट एवरीवन। Good night. Sorry for the inconvenience.